Hello everyone, this is Sumit from Dear Nursing, and in this video we are going to solve some important questions related to our MSN Neurology system. At the end of this video, don't forget to evaluate yourself and do comment your marks out of 20 in the comment section below. So let's start. Question number 1. Savita has a neurological deficit involving the limbic system. The patient would show which clinical symptoms specific to this deficit. Option 1, cannot recall what was eaten for breakfast today. Option 2, is disoriented to person, place and time. Option 3, affect is flat with periods of emotional ability. Option 4, demonstrate inability to add and subtract. So the right answer is option 3, affect is flat with periods of emotional lability. एक्सप्लेनेशन, हमारा जो लिम्बिक सिस्टम होता है इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कंट्रोलिंग अवर इमोशंस, अफेक्ट एंड फीलिंग्स. कैलकुलेटिंग एबिलिटी इज कंट्रोल्ड बाय फ्रंटल लोब. सेरिब्रल हेमिस्फीयर हमारा कंट्रोल करता है ओरिएंटेशन फंक्शन को, और रिकॉल ऑफ इवेंट्स इज कंट्रोल्ड बाय अवर हिपोकैम्पस. क्वेश्चन नंबर 2. Ravi comes into the emergency room after hitting his head in a motor vehicle accident. He is alert and oriented. Which of the following nursing interventions should be done first? Option 1, open the airway with the head tilt and chin lift maneuver. Option 2, immobilize the client's head and neck. Option 3, assess full ROM to determine extent of injuries. Option 4, call for an immediate chest x-ray. So the right answer is option 2, immobilize the client's head and neck. एक्सप्लेनेशन, क्योंकि इस क्वेश्चन में हेड इंजरी है पेशेंट को, सो हम अज्यूम करेंगे देयर कैन बी चांसेस ऑफ सर्वाइकल स्पाइन इंजरी ऑल्सो. इसीलिए हम इमोबलाइज कर देंगे हेड और नेक को टू प्रिवेंट एनी फर्दर कॉम्प्लिकेशन. क्योंकि पेशेंट अलर्ट एंड ओरिएंटेड है, सो देयर इज नो नीड टू ओपन द एयरवे. असेसिंग रेंज ऑफ मोशन इज कॉन्ट्राइंडिकेटेड क्योंकि सर्वाइकल स्पाइन इंजरी हो सकती है पेशेंट को, एंड immediate chest x-ray is not required in this case. Question number 3. Vasopressin is given intramuscularly for which of the following reasons after a hypophyseectomy? Option 1, to reduce cerebral edema and lower intracranial pressure. Option 2, to replace ADH normally secreted by the pituitary. Option 3, to prevent syndrome of inappropriate antidiuretic hormone. Option 4, to treat growth failure. So the right answer is option 2, to replace ADH normally secreted by the pituitary. Explanation, हाइपोफाइसेक्टोमी का मतलब होता है रिमूवल ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड, और अगर हम ऐसा करेंगे देन बॉडी विल नॉट बी एबल टू सिंथेसाइज ADH. सो वी विल गिव वेसोप्रेसिन टू रिप्लेस ADH normally secreted by the pituitary. सेरिब्रल एडिमा और आईसीपी को डिक्रीज करने के लिए हम देते हैं मैनिटॉल और कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स. और एडीएच के एक्सेस से होता है हमारा सिंड्रोम ऑफ इनएप्रोप्रिएट डायूरेटिक हार्मोन, और ग्रोथ फेलियर को सही करने के लिए वी गिव सोमैटोट्रोपिन और ग्रोथ हार्मोन. क्वेश्चन नंबर 4. विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन शोज ट्रेंड्स दैट इंक्लूड इंक्रीजिंग टेम्परेचर विद ब्लड प्रेशर एंड डिक्रीजिंग पल्स एंड रेस्पिरेशन? Option 1, cerebral aneurysm. Option 2, increasing intracranial pressure. Option 3, decreasing intracranial pressure. Option 4, arrhythmias. So the right answer is option 2, increasing intracranial pressure. Explanation, increased intracranial pressure में हमें टेम्परेचर एंड ब्लड प्रेशर इंक्रीज देखने को मिलता है, एंड पल्स और रेस्पिरेशन डिक्रीज देखने को मिलता है. Question number 5. The client is having a lumbar puncture performed. The nurse would plan to place the client in which position for the procedure? Option 1, prone with the pillow under the abdomen. Option 2, prone in a slight Trendelenburg position. Option 3, side lying with pillow under the hip. Option 4, side lying with legs pulled up and head bent down onto the chest. So the right answer is option 4, side lying with legs pulled up and head bent down onto the chest. Explanation,
This position helps to open the spaces between the vertebrae so that the lumbar puncture can be performed easily. Question number 6. Which of the following conditions can cause autonomic dysreflexia? Option 1, noxious stimuli. Option 2, headache. Option 3, lumbar spinal cord injury. Option 4, neurogenic shock. So the right answer is option 1, noxious stimuli. Explanation: autonomic dysreflexia जब होता है when there is the injury at T10 level or above. इसका usually जो symptom होता है is headache and the cause is noxious stimuli like full bladder, fecal impaction or decubitus ulcer. Question number 7. Mr. Ravi has been started with the thrombolytics. The nurse explains that the expected outcome of thrombolytic drugs therapy is to: option 1, dissolve emboli; option 2, to produce vasoconstriction; option 3, to prevent hemorrhage; option 4, to increase vascular permeability. So the right answer is option 1, dissolve emboli. Explanation: नाम से ही पता लग रहा है हमें thrombolytic, that means lysis of thrombus or emboli. So the right answer is to dissolve emboli. Question number 8. Mr. Sanjeev, diagnosed with atrial fibrillation, has experienced a mini stroke. Which medication would the nurse anticipate being ordered for the client on discharge? Option 1, oral warfarin. Option 2, propranolol. Option 3, streptokinase. Option 4, colchicine. So the right answer is option 1, oral warfarin. Explanation: मिनी स्ट्रोक मीन्स ट्रांजिएंट इस्चेमिक अटैक. अब क्योंकि पेशेंट को डायग्नोसिस इज एट्रियल फिब्रिलेशन, सो देयर इज अ रिस्क ऑफ सेकेंडरी थ्रोम्बस फॉर्मेशन. सो टू प्रिवेंट फर्दर थ्रोम्बस फॉर्मेशन हम पेशेंट को एडवाइस करेंगे ओरल वारफरिन और एंटीकोगुलेंट ड्रग एट द टाइम ऑफ डिस्चार्ज. Propranolol is a beta blocker drug that will slow the heart rate, so no use. Streptokinase एक thrombolytic drug है और ये हम इनिशियल स्टेजेस में देते हैं इंट्रावीनसली टू ब्रेक द थ्रोम्बस. डिस्चार्ज के टाइम पे इट इज़ ऑफ नो यूज. कॉल्किसिन इज अ एंटी गाउट मेडिसिन. Question number 9. Which of the following signs indicate hemorrhage in a client who had a transsphenoidal hypophysectomy? Option 1, abdominal pain. Option 2, hematuria. Option 3, frequent swallowing. Option 4, bloody drainage from the ears. So the right answer is option 3, frequent swallowing. Explanation: hypophysectomy is the removal of pituitary gland through transsphenoidal approach. इस केस में अगर पेशेंट में देर इज़ फ्रीक्वेंट स्वालोइंग आफ्टर द सर्जरी तो वो हमें बताता है दैट देयर इज़ द फ्लूइड और ब्लड लीकिंग फ्रॉम द साइनस इनटू द ओरोफेरिंग्स. सो द राइट आंसर इज फ्रीक्वेंट स्वालोइंग. abdominal pain and hematuria are unrelated और ब्लडी ड्रेनेज फ्रॉम द ईयर्स इंडिकेट करता है हमें बेसिलार स्कल फ्रैक्चर. क्वेश्चन नंबर 10. A client with the cervical spine injury has Gardner-Wells tongue inserted for which of the following reasons? Option 1, to immobilize the cervical spine. Option 2, to hasten wound healing. Option 3, to prevent autonomic dysreflexia. Option 4, to hold bony fragments of the skull together. So the right answer is option 1, to immobilize the cervical spine. Explanation: Gardner-Wells tongue, Winke and Crutchfield tongues हमारे यूज होते हैं टू इमोबिलाइज द सर्वाइकल स्पाइन until the surgery is performed. Question number 11. A patient diagnosed with ischemic stroke has been started with thrombolytic therapy. The primary goal during the first 24 hours is to control the client's option 1, temperature, option 2, pulse, option 3, respiration, option 4, blood pressure. So the right answer is option 4, blood pressure. Explanation: thrombolytic therapy start करने के बाद the major adverse effect within first 24 hours is
intracerebral hemorrhage. So that's why the priority is to control the blood pressure to prevent any bleeding. बाकी vital signs भी important है, but the priority is blood pressure. Question number 12. A 52-year-old male client arrives in the emergency department with an ischemic stroke. The doctor started tissue plasminogen activator or TPA. Which is the priority nursing assessment for this client? Option 1, head to toe assessment. Option 2, current medication. Option 3, time of onset of stroke. Option 4, any planned surgical procedure. So the right answer is option 3, time of onset of stroke. Explanation. जब भी हम किसी पेशेंट में TPA और टिश्यू प्लाज्मिनेशन एक्टिवेटर स्टार्ट करते हैं तो मोस्ट इंपॉर्टेंट असेसमेंट इज टाइम ऑफ ऑनसेट ऑफ स्ट्रोक, बिकॉज अगर हम TPA को विद इन 3 आवर्स ऑफ इस्चेमिक स्ट्रोक देते हैं तो उसका जो रिजल्ट होता है दैट इज मच सक्सेसफुल. हेड टू टो असेसमेंट कंप्लीट इज नॉट मच इम्पॉर्टेंट. करंट मेडिकेशन इज ऑल्सो नॉट इम्पॉर्टेंट. और अगर कोई प्लान सर्जिकल प्रोसीजर है ड्यूरिंग TPA एडमिनिस्ट्रेशन तो हमें उस प्रोसीजर को स्टॉप करना पड़ेगा बिकॉज ऑफ रिस्क ऑफ ब्लीडिंग, बट द प्रायोरिटी इज टाइम ऑफ ऑनसेट ऑफ स्ट्रोक. क्वेश्चन नंबर 13. Which of the following is used to test the unconscious patient's peripheral response to pain? Option 1, pressure on the orbital rim. Option 2, nail bed pressure. Option 3, sternal rub. Option 4, squeezing the sternocleidomastoid muscle. So the right answer is option 2, nail bed pressure. Explanation. Peripheral response to pain को चेक करने के लिए we do nail bed pressure. बाकी जितने भी हैं that are used to check the central response to pain. Question number 14. A patient is having the intracranial pressure of 25 mm Hg. The nurse tells the patient that the following activities increase the intracranial pressure except option 1, exhalation during repositioning. Option 2, coughing vigorously. Option 3, isometric exercises. Option 4, blowing of nose. So the right answer is option 1, exhalation during repositioning. Explanation. 25 mm Hg जो हमें ICP दिया है that is increased intracranial pressure. तो इस क्वेश्चन में हमें बताना है कि कौन सा ऐसा एक्टिविटी विल नॉट इंक्रीज इंट्राक्रेनियल प्रेशर, सो दैट इज एक्सलेशन ड्यूरिंग रीपोजिशनिंग, वेयर एज बाकी जो भी 3 है दैट इंक्रीजेस इंट्राक्रेनियल प्रेशर. क्वेश्चन नंबर 15. अ लंबर पंचर इज परफॉर्म्ड ऑन अ चाइल्ड सस्पेक्टेड ऑफ हैविंग बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस. विच ऑफ द फॉलोइंग रिजल्ट वुड वेरीफाई द डायग्नोसिस? ऑप्शन 1, cloudy CSF, decreased protein and decreased glucose. Option 2, cloudy CSF, elevated protein and decreased glucose. Option 3, clear CSF, elevated protein and decreased glucose. Option 4, clear CSF, decreased protein and elevated glucose. So the right answer is option 2, cloudy CSF, elevated protein and decreased glucose. Question number 16. Which of the following position is contraindicated in increased intracranial pressure? Option 1, head of the bed elevated 30 to 45 degree. Option 2, head in neutral position. Option 3, head turned to the side. Option 4, head in midline. So the right answer is option 3, head turned to the side. Explanation. अगर हम हेड ऑफ द बेड एलिवेट करेंगे 30 to 45 डिग्री दैट विल हेल्प टू डिक्रीज द ICP. हेड इन न्यूट्रल पोजीशन एंड हेड इन मिड लाइन विल नॉट चेंज द ICP, और हेड टर्न करेंगे अगर साइड में दैट विल इंक्रीज ICP. क्वेश्चन नंबर 17. विच ऑफ द पोजीशन इज सूटेड फॉर द अनकॉन्शियस पेशेंट? ऑप्शन 1, सुपाइन पोजीशन. ऑप्शन 2, प्रोन पोजीशन. ऑप्शन 3, सेमी प्रोन पोजीशन. ऑप्शन 4, Trendelenburg position. So the right answer is option 3, semi-prone position. Explanation. This position is used to drain out the secretions of the unconscious patient to prevent from aspiration. Question number 18. Brodmann's area 46 refers to option 1, primary visual cortex. Option 2,
primary motor cortex, option 3 primary auditory cortex, option 4 dorsolateral prefrontal cortex. So the right answer is option 4 dorsolateral prefrontal cortex. Question number 19. Which of the following condition is characterized by throbbing headache, flushing of the face and neck, bradycardia and sudden severe hypertension? Option 1 autonomic dysreflexia, option 2 malignant hypertension, option 3 spinal shock, option 4 neurogenic shock. So the right answer is option 1 autonomic dysreflexia. Explanation. Autonomic dysreflexia जब देखने को मिलता है when there is the injury in our spine above the T6 level, or it is also caused by any noxious stimuli, and the symptoms are throbbing headache, flushing of the face and neck, bradycardia and sudden severe hypertension. Question number 20. A state in which client shows continuous seizure in rapid succession without regaining consciousness for at least 30 minutes is option 1 status epilepticus, option 2 status asthmaticus, option 3 grand mal seizure, option 4 petit mal seizure. So the right answer is option 1 status epilepticus. Explanation. स्टेटस एपिलेप्टिकस एक ऐसा सीजर होता है दैट इज कंटिन्यूअस जिसमें पेशेंट कैन नॉट रीगेन कॉन्शियसनेस फॉर एटलीस्ट 30 मिनट्स. स्टेटस एस्थमेटिकस इट्स द एक्यूट एक्सैसरबेशन ऑफ अस्थमा. ग्रैंड मैल सीजर देखने को मिलता है अडल्ट्स में, while petit mal is seen in children. This is the end of this video. Don't forget to comment your marks below. Hope you all liked.